बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक करंट एंड करंट डेंसिटी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है if a charge of 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb flows per second through any cross section of any conductor, the current will be। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी गई है बच्चों हमको। चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb है। That is flows per second through any cross section of any conductor, the current will be। current पूछा गया है। We know current is equal to charge flown per unit time, that is I is equal to Q by T। ठीक है बच्चों, Q की वैल्यू हमको पता है 1.6 into 10 power of minus 19 कूलम कितने सेकेंड के लिए? फॉर 1 सेकेंड। ओके, कूलम पर सेकेंड, व्हाट इज कूलम पर सेकेंड इज नथिंग बट एम्पेयर itself। I is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 एम्पेयर इज द राइट आंसर। ओके, तो इसमें कहाँ है 1.6 into 10 to the power of minus 19 एम्पेयर इज द राइट आंसर। सी इज द आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट के 60 सेकेंड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ, करंट दिया गया है, आई दिया गया है। ठीक है, नाउ वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ओके, चार्ज फ्लोन हमको पता है Q इज इक्वल टू NE बाई टी। ठीक है बच्चों, I इज इक्वल टू NE बाई टी हो गया। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E इज इक्वल टू, दैट इज वी नो व्हाट इज E, 1.6 into 10 minus 19 हो गया। T दिया है 1 मिनट 60 सेकेंड एंड करंट वैल्यू यू नो हाउ मच, दैट इज 8 amperes। यू हैव टू फाइंड आउट N। ओके, N इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई दिस, IT divided by E। ठीक है बच्चों, substitute the values। I you know 8 amperes into for how many seconds, that is for 60 seconds, divided by you know what is E, 1.6 charge on, okay, 1.6 into 10 minus 19, charge on the electron is 1.6 into 10 minus 19। N is equal to 8 into 60, that is I can write directly 480 into how much? This one you can write whenever you have 1 by E, okay, that you can write 1 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 can be written as 6.25 into 10 to the power of 18 you can write। okay, this can be written as 6.25 into 10 to the power of 18। ठीक है बच्चों, N is equal to, हाँ, you multiply how much, 480 into 6.25, that is approximately, that is equal to 3000 you will get। okay, 3000 into 10 to the power of 18, that is equal to 3 into 10 to the power of 3, you can write 10 to the power of 3 plus 18 is 10 to the power of 21 you can write। okay, N is equal to how much you are getting, 3 into 10 to the power of 21 is the right answer। this is the right answer। but whenever you have, like for example, N is equal to 480 into 6.25 into 10 to the power of 18, how to simplify this is very easy। 480 you can write 6.25, that is 6 1 by 4, you can write this as 4 6 are 24 plus 1 is 25 by 4। ठीक है बच्चों, 25 by 4 हो जाएगा into 10 to the power of 18। ठीक है बच्चों, this you divide 120। okay, 12 into 25 is, that is 12 into 25 we know that is equal to 300 120 से multiply 3000 हो जाएगा। 3000 into 10 to the power of 18। hope you have understood। this is the right answer। 3 into 10 to the power of 21 number of
the number of electrons will be how much? 3 into 10 to the power of 21. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे दिया गया है इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कितना है 1.5 t स्क्वायर प्लस ऑफ t. ओके, देन द करंट इन एम्पेयर इज caused in t is equal to 2 seconds will be how much is the current. यहाँ पे instantaneous current पूछ रहा है बच्चों. Okay, we know what is current. Instantaneous current is given by I is equal to dq by dt. ठीक है बच्चों. Now d by dt of in place of q you write on 1.5 t square plus of t. ठीक है बच्चों. I is equal to what is 1.5, what is differentiation of t square? That is 2t into 2t. And what is differentiation of t with respect to t? That is 1. That is equal to 3t plus of 1 हुआ. ठीक है बच्चों. I is equal to at t is equal to 2 seconds. When t is equal to 2 seconds, what is the answer? 3 into 2 plus of 1. That is equal to 6 plus 1 is equal to 7 amperes is the right answer. Okay. Hope you understood. It's very easy. Instantaneous current is given by I is equal to dq by dt. I is equal to dq by dt. You can write the answer. That is 7 amperes. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ये क्वेश्चन कह रहा है इन हाइड्रोजन आटम the electron moves in an orbit of radius. Radius दिया गया. How much is the radius? Radius r is equal to 5 into 10 to the power of minus 11 meter with a speed. Okay. Speed दी गई. Velocity v is equal to how much? Velocity 2.2 into 10 to the power of 6 meters per second. You know हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बच्चों? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन. ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन एटम है. And now it is speed of the equivalent current. We know what is current. I is equal to charge flown per unit time. ठीक है बच्चों. That is equal to what is velocity is equal to distance by time. Then what is time will be equal to? Time will be equal to distance by velocity. Distance by velocity. इसका डिस्टेंस कितना है? Circumference. Okay, that is 2 pi r. C is equal to 2 pi r. Velocity is given. V is given. Substitute here in q. That is equal to q divided by, in place of time I can write this as 2 pi r by v. तो qv हो जाएगा ये qv divided by 2 pi r. ठीक है बच्चों. I is equal to what is q? That is charge, electron. Okay, current is due to the movement of the electron. The electron moves in an orbit. I is equal to ev by 2 pi r. Now slowly substitute the values. E, we know charge on the electron. I is equal to ev by 2 pi r. E is how much? 1.6 into 10 to the power of minus 19. Velocity कितना है बच्चों? Velocity is 2.2 into 10 to the power of 6 divided by 2 into pi into r is how much? Radius 5 into 10 to the power of minus 11. ठीक है बच्चों. यहाँ पे now you simplify this one. If you simplify, you will be getting this as 1.6 into 2.2. How much? That is 3.52. I can write 3.52 divided by 10 pi. ठीक है बच्चों.
1.6 into 2.2 is how much? 3.52 by 10 pi into 10 to the power of minus 19 plus 6, minus 19 plus 6 plus 11, 10 power of minus 2 हो जाएगा. That is equal to 10 pi is how much? 3.14 into 10 is 31.4. Approximately this will be how much? That is same as 1.1. Okay, 1.12 milliamperes. That is 10 to the minus 3 हो जाएगा amperes. That is nothing but 1.12 milliampere. This is the right answer. That is the equivalent current. Okay, because of the movement of this electron. Okay, 1.12 milliamperes is the right answer. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लोज सर्क्यूट द करंट I at an instant of time is given by instantaneous current is given by I is equal to कितना है 4 minus 0.08 t है. This is the instantaneous current, so many amperes. The number of electrons flowing in 50 seconds through the cross section of the conductor is, we know I is equal to dq by dt. ठीक है बच्चों, q is equal to क्या होता है? q is equal to ne होता है. n is nothing but that is number of electrons, n is nothing but q by e होता है. You have to find out first q. How to find q from here? It is very easy. You can find out q as dq is equal to कितना हो जाएगा? I into dt हो जाएगा. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट dq is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I dt. ये 0 to q है. ठीक है बच्चों, और ये 0 to t है. 0 to t है. ठीक है बच्चों. नाउ दिस इज q इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्लोइंग इन 50 सेकेंड्स. 50 सेकेंड 0 to 50 ले लेंगे यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ dq ओके क्या हो जाएगा? q ही हो जाएगा. इफ यू अप्लाई द लिमिट्स आल्सो यू गेट q इज इक्वल टू 0 to 50. I कितना है? I इज 4 माइनस ऑफ 0.08 t है into that is dt. Okay, now we will integrate this one. Q is equal to, what is integration of 4 with respect to t? That is 4t minus of 0.08. This is constant. What is integration of t with respect to t? That is t square by, okay, integration of t with respect to dt, that is t square by 2. You have to apply the limit, that is 0 to 50. 0 to 50. Q is equal to, that is 4 into 50 minus of upper limit minus lower limit minus of 0.08, 0.04 हो जाएगा ये. 50 स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, Q इज इक्वल टू 200 हो जाएगा माइनस 0.04 इंटू 2500. दैट इज इक्वल टू 200 माइनस ये 100 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 100 कूलम. ठीक है बच्चों, नाउ what is Q is equal to NE. You find N from here. Q by E. Q कितना है? 100 divided by 1.6 into 10 to the minus 19. 1.6 into 10 to the minus 19 आपको पता है 6.25 into 10 to the power of 18. That is equal to 6.25. ये हो जाएगा into 10 to the power of 18 plus 2 is 20. 6.25 into 10 to the power of 20. This is the right answer. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. One end of an aluminum wire whose diameter is 2.5 mm. ठीक है, is welded to one end of
a copper wire whose diameter is 2 mm. The composite wire carries a steady current of 6.25. The current densities are densities of aluminum और copper पूछा है. We know current density of aluminum nothing but current divided by area of aluminum. ठीक है बच्चों, that is I is equal to pi area by r square. We know r is equal to d by 2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया गया है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई पाई इंटू डी बाई 2 दी होल स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा बच्चों? आई डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4i बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो करंट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 4 इंटू आई कितना है 6.25 डिवाइड बाई पाई इंटू इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ दैट इज एल्यूमिनियम वायर इज 2.5 mm. आंसर दिया गया है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻1 लेंगे, दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 4 into 6.25 that is equal to 25 divided by pi into 2.5 into 2.5 that is equal to 6.25 into 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे 25 बाई 6.25 दैट इज इक्वल टू 4 बाई पाई दैट इज इंटू 10⁻+2. 4 by pi is approximately equal to 1.27 into that is equal to 127 आ जाएगा, 127 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 127 बच्चों यहाँ पे आ रहा है 127 दैट इज फॉर एल्यूमिनियम. यहाँ पे 120 125. दिस इज द राइट आंसर. इन द सेम वे ट्राई टू कैलकुलेट द करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू I divided by ये copper. Okay, same you calculate, you will get that is equal to 4i by pi d square. यहाँ पे फार्मूला मैंने रेडीमेड दे दिया है आपको. 4 इंटू आई कितना है 6.25 डिवाइड बाई पाई इंटू डी कितना है, दैट इज डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज हाउ मच 2 mm. ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज 4 इंटू 6.25 आपको पता है 25 डिवाइडेड बाई ये 4 पाई हो जाएगा. 2 इंटू 2 इज 4 पाई दैट इज इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, 25 बाई 4 पाई 25 डिवाइड बाई 4 into pi that is approximately कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. 2 into 10 square that is equal to 200 amperes per centimeter square. ठीक है बच्चों, so this is the right answer. 200 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द राइट आंसर. बच्चों आज के लिए बस इतना ही. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू वन एंड ऑल.